Follow us to stay updated on debates, discussions, facts, and tips about health. Click on the subscribe button and the bell icon for latest updates. Diabetes impacts various organs, and one of its most alarming complications is diabetic stroke. Persistently high blood sugar levels can damage blood vessels, significantly increasing stroke risk. Yet, many remain unaware of the serious threat. This lack of awareness often leads to delayed recognition and intervention, resulting in severe health consequences. Today, let's explore the vital role of awareness in reducing the impact of diabetic stroke and discuss strategies to protect those at risk. Welcome, everyone. I'm Dr. Sammi Saluja from THIP Media, and today, to help us understand the critical complication of diabetic stroke, we are honored to be joined by the esteemed health expert, Dr. Banshi Saboo. Dr. Banshi Saboo is a distinguished healthcare leader renowned for his unwavering dedication to advancing diabetes care and endocrinology. As the Chief Diabetologist and Chairman of the Diabetes Care and Hormone Clinic in Ahmedabad, Sir has significantly impacted diabetes management in India. A testament to his visionary leadership is the Diabetes Free India 2030 initiative, aiming to eradicate diabetes in the country by 2030. This ambitious project has garnered national attention, including acknowledgement from the Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. Dr. Saboo's commitment to public health is further exemplified by his founding of the NGO Diabetes Care India and the Indian Sweet Registry Project, both dedicated to enhancing diabetes awareness and management. In his role as the Eco India Hub leader in Ahmedabad, Sir contributes significantly to medical education and capacity building, reflecting his dedication to knowledge dissemination. His editorial expertise as managing editor for Satico's International Textbook of Diabetes underscores his commitment to advancing medical literature. Additionally, his involvement in formulating guidelines for the Research Society for the Study of Diabetes in India, Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, or ATTD, Continuous Glucose Monitoring, and the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, showcases his influence in shaping best practices in diabetes care. Sir's scholarly contributions include numerous publications in index journals and authorship of textbooks and monographs, establishing him as a respected authority in his field. His exceptional work has been recognized with prestigious accolades, such as Most Impactful Healthcare Leader award by the World Health and Wellness Congress. Sir's dedication to public health is evident through initiatives like the RSSDI Defeat Diabetes campaign, knowledge-based diabetes awareness movement, and intensive diabetes education and awareness to stop heart attack. Collaborating with organizations like the Ahmedabad Municipal Cooperation and the World Diabetes Foundation, Dr. Saboo has elevated the standard of care for type 1 diabetes patients, particularly in Gujarat. Sir currently serves as chair-elect for the International Diabetes Federation for South Asia 23-24 and is a Global Council member of the European Association for the Study of Diabetes. Dr. Saboo has also held significant positions as the immediate past president of the RSSDI and president of the All India Association for Advancing Research in Obesity. Additionally, he contributes to the academic community as an advisory board member for journals including the Journal of the Association of Physicians of India, the Journal of Diabetology, and the Journal of Obesity and Metabolic Research. Dr. Banshi Saboo's relentless pursuit of excellence and innovation continues to drive transformative changes in diabetes care, solidifying his status as a leading figure in the field. Dr. Banshi Saboo, THIP Media welcomes you, sir.
Thank you so much for joining us today, sir. Sir, we understand, that diabetic stroke, it is a very serious and often, an underestimated complication for individuals, who are struggling with diabetes. And yet many not fully recognize its risks or importance of early intervention. So to address this concern, I'd like to begin with the most fundamental question here, that what exactly is diabetic stroke and how does it differ from strokes in non-diabetic individuals? That's great. Very important question and very much under-recognized complication by the lay people. They Ji sir. don't understand that a diabetes can lead to stroke. Ji sir. And there is a significant difference between a person with diabetes having a stroke and a Ji. non-diabetic people having a stroke. Ji sir. Definitely non-diabetic also have the risk factor like hypertension, other Ji sir. reasons for atherosclerosis, but Ji. diabetes itself accelerates the atherosclerosis so much so that Ji. the stroke which happens in persons with diabetes is quite big. That's number one. The second Ji. is diabetic people also have complications like silent MI, a coronary artery disease, is Ji completely sir. silent. And Ji. that also leads to sometimes their heart failure or their heart pumping is also this. And they Ji. get embolic stroke also. They get Okay. also embolic stroke through their atherosclerotic carotid artery. Because the Ji. carotid artery is getting atherosclerosis since long behind diabetes. And Ji. from that also embolism can go inside the brain and they can have acute stroke. Now, Ji sir. problem is the prognosis. The prognosis with people with diabetes having a stroke have a much poorer in compared to persons who does not have diabetes. Ji. One is the acute intervention, which can be done within 3 hours of a stroke, is Ji. better, as far as prognosis is concerned, non-diabetes in compared to persons with diabetes. Ji. Now, why I am saying it is under-recognized complication of a diabetes? Because lay people feel that diabetes leads to kidney problem, diabetes leads to foot problem, which is they are very much worried of. Diabetes Yes. leads to blindness, diabetes leads to heart attack. Ji. But this is also very common. Ji. And in persons with having a diabetes atherosclerosis, like peripheral Ji. vascular disease, like coronary artery disease, they may also have stroke. The Ji. worst part is the quality of life. If someone have a Yes. diabetes and stroke, the overall quality of life is significantly deteriorated. So I Ji. always explain the patient that we should have good control of diabetes along with other risk factors, which is like smoking cessation, good control of blood pressure, good control of cholesterol. They all Ji. are required to prevent you from many complications. It is the Ji. duty of a doctor that once person comes to your clinic, we should Ji. explain that what will happen if we will not keep your control in a very good control, or will not keep your other risk factors under good control. Otherwise, it may lead to different complications. And Ji. this complication we must explain the patient because it leads to very bad quality of life. Yes. Right. And like sir, you just mentioned that this particular complication, it can lead to very bad quality of life. So how would you explain a layperson that how does diabetes mellitus, increase the risk of stroke, and what It is underlying six times. mechanisms are It is six involved? times. It is 6 times higher in persons with non-diabetes. So person having diabetes having 6 times higher risk of it. Ji. Uncontrolled will lead to more. So to explain in a very layman language, in a Ji. Hindi, we Ji. explain जैसे हमारा शुगर हम पानी में एक्स्ट्रा होता है तो इट विल बिकम वेरी जाड़ा इसको हम चाशनी बोलते हैं नॉर्थ Ji. गुजरात आई मीन Ji. नॉर्थ so the similar type of your blood will also become very thick. And Ji. there is a possibility this amount of the thick blood which is moving in your body, which also have high cholesterol, a Ji. high sugar, which is normally it should be between 80 to 120, Ji. उसके बजाय ये ज्यादा रह रहा है. So there is a हाँ possibility it can get thrombosed at some particular place. Now जी. when it get thrombosed, coronary artery, it leads to जी. heart attack. That हाँ is जी. your heart attack आ गया, and that is still angioplasty or a bypass surgery, which is possible.
but जी which is not so possible when it goes and stuck inside the brain. जी The second problem is the brain have all the areas which are responsible for functions of different area of body. So जी suppose it gets stuck in one particular area which is responsible for your speech, maybe responsible for your hand movement, for your foot movement, or for your leg movement, it जी will get completely affected. And people know about the paralysis. That's a हाँ very जी common word which is there. And जी then they know that the quality of life with paralysis हाँ remaining जी in bed for a long period of time, and जी that itself leads to a lot of complication. The bedridden people also have a lot of other complications because of their physical movement decrease significantly. They are more prone to develop a lot of infection also. So जी this is how we should explain. इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को डरा रहे हैं. इसका मतलब हाँ है जी हम किसी को चेतावनी दे रहे हैं. हाँ It's जी like you are saying someone that this may lead. We जी can't say for one particular person that this may lead. The हाँ जी second challenge is some of our patients, they stop medication suddenly, and your ओके sugar suddenly increase 400, हाँ जी 500. हाँ So, जी stroke in a diabetes is because of very acute hyperglycemia. Suddenly, your sugar was absolutely well controlled, which was around जी 150. And हम्म one fine day, they find that कि सर शादी में गए थे 4 दिन थे दवाई भूल गए वहां खूब खाना पीना हो गया एंड देन सडनली माता जी का शुगर 520 है. So that sort of a sugar very high is actually responsible for diabetes stroke. I mean, that's a really very common complication. So we also explain that wherever you, whatever is the reason, I mean, don't forget to take your medication, particularly the patients who are older age, जी relatively long standing diabetes, they might be on insulin or other therapy. We जी specifically say them, please आप अपनी दवाई साथ में लेके जाइए. Not only जी दवाई, also जी take your glucose meter along with you हाँ to जी randomly check your sugar multiple times and make sure that you don't take anything which is direct simple sugar. People हाँ in जी marriage, they think that it is a cheat day. Sometimes they eat so much so the sugar suddenly increase and that leads to जी complication. So this is how you have to explain the patient. Is very very important. We जी try to explain the patient. The reason is very simple. We don't want our patients to develop any complication. They जी should have good quality of life, and जी whatever medications which are available them for to prevent all these problems, we जी always try. But lifestyle modification and educations are very very important. Without जी that, even whatever amount of medication you give, जी unless you educate the patient, they will not follow. They will not be compliant. हाँ जी हाँ जी सर एंड आई थिंक पेशेंट कंप्लायंस में अपार्ट फ्रॉम द रिस्क फैक्टर्स जो आपने अभी हमें बताया कि थोड़ा अपना बीपी आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कीजिए अपना स्ट्रेस को आप कंट्रोल में रखिए एंड abnormal कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो आपके ब्लड थिकनिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए बट आई थिंक इस सब के अलावा एक बहुत नॉर्मल सी एक चीज है एंड जो सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं एंड दैट इज अ कंफर्टेबल क्वालिटी स्लीप. Right, sir. So, do sleep quality and duration impact stroke risk in individuals with diabetes? So this can be the quality of sleep अच्छी नहीं है. It means there's an underlying stress. हाँ जी, No, otherwise a normal person have a good sleep between 5 to 7. There are जी, some reasons who does not have good quality of sleep, maybe because of obstructive sleep apnea. हाँ जी, Obesity itself is a reason for that. They may जी, have severe painful neuropathy. They may जी, have a uncontrolled diabetes जिसके कारण रात को बार बार infection या यूरिन करने जाना पड़ रहा है. They may जी, have a prostate maybe having a increased in size, जी. or the reason is definitely underlying some stress. So जब भी Okay. हम पेशेंट से बात करते हैं regarding his lifestyle or her lifestyle, we जी, definitely talk about the sleep, quality जी, of sleep, and sleep hygiene. At हाँ जी, what time sleep, हाँ जी, when time, how much time they see their mobile, and what type of movie they see, whether they get sleep regularly or not at the same time, how much they sleep, whether 6 or 7 hours is comfortable sleep और रात को बार बार उठना पड़ता है. Is it the painful legs which are responsible for them not to have a good sleep? Is it the again and again they have to go for
washroom may be the reason for them. So ठीक all है। these things we commonly ask, और ये सारी चीज बहुत ही important है when we discuss all these issues. Definitely, जी a good quality of sleep અને उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल को ओवरऑल बताती है। यदि एक आदमी 6 से 8 घंटा अच्छी तरह से sleep है जी without any disturbance, that is the जी best. But they हाँ may जी also ask the spouse about the obstructive sleep apnea, snoring, रात को in between उठने का. So they all are very, very important. But जी mostly we have seen those who are not sleeping well is the underlying stress. And you know, the stress is the reason for their sugar to increase. Stress is the reason for them to have a high pulse. Stress is the reason for them to have high blood pressure also. So their जी sugar, their blood pressure, everything increase, their other risk factor increase, and that leads to also stroke. So जी good quality of life is very, very important. And very rightly you said that you must take a proper history to ask the sleep जी quality and sleep hygiene also. हाँ जी, हाँ जी सर। एंड आपने जैसे अभी बताया कि पेशेंट एजुकेशन का बहुत महत्व है, particularly जब हम काउंसिल करते हैं for somebody who's been diagnosed with diabetes। तो आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें उनके वार्निंग साइंस भी रहेंगे, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स अगर अपना ब्लड शुगर लेवल, अपना ब्लड लेट्स से ब्लड जो आपका जितना भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल्स होते हैं, उनको आप टाइमली मॉनिटर नहीं करते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क पर रहेंगे। Right, sir. So, what are the common warning signs and symptoms of the stroke that individuals with diabetes, should be vigilant about? So one is the regular monitoring of everything, monitoring of blood pressure, home blood pressure monitoring कहते हैं उसको, self जी, monitoring of blood glucose, because this is जी, very important. Nowadays, जी, continuous glucose monitoring and ambulatory blood pressure monitoring is also very important. हाँ Sometimes जी, those who have a lot of fluctuation, उनको हम continuous monitoring करने के लिए कहते हैं. जी, इसके अलावा कुछ जनों को आपने देखा होगा वार्निंग साइन में कि आपको पहले कुछ चक्कर आ रहे थे, ठीक आपने है, उसको इग्नोर कर दिया. कभी कभी ठीक है, आपको टीआईए जैसा भी सिम्टम हुआ, यानी एकदम से आपको स्ट्रोक का हुआ और तुरंत ही आप ठीक हो गए, बट यू डिड नॉट गो टू द डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन. इस टाइप के जी, लोगों का हम एमआरआई वास्कुलर स्कैन करा के देख लेते हैं, फिर हाँ जी, ऑलरेडी ब्लॉकेज चालू तो नहीं हो गए. हाँ और जी, इस कंडीशंस को हम उनको और एग्रेसिवली, न केवल ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, विच वी कॉल इज ए बी सी, योर A1C, योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ऑल हाँ थ्री जी, को बहुत टाइटली कंट्रोल करते हैं. हाँ कभी जी, कभी कुछ लोग हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, विच में कंफ्यूज इट विथ टीआईए, यानी आपका जी, ब्लड शुगर एकदम से डाउन हो गया और जी, आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रोक हुआ है, या शुगर डाउन होने के कारण उनको ऐसा स्ट्रोक के साइंस भी हो गए, पूरे फुल फ्लेज जी, सिम्टम्स भी आ गए, एंड बाय जी, इंप्रूविंग इट दे मे इम्प्रूव इट ऑल्सो. सो हाँ ये जी, भी एक कंडीशन है, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में भी द रीजन फॉर दैट. सो हाँ जी, डील विद इट. सो मेरा ये सबको कहना है कि जिनको भी इस टाइप के साइन है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, जैसे हमने बताया दवाई कभी नहीं छोड़नी, कभी शुगर बढ़ावा नहीं होना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए, उसी प्रकार अपने सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड प्लस डॉक्टर को इमीडिएट अपने कोई भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो तो जरूर से बताए, ताकि हम उसको अर्ली केस के अंदर डायग्नोज करके उनकी ये प्रॉब्लम को डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, और काफी हद तक उसको ट्रीट कर सकते हाँ जी, हाँ जी सर। एंड द वंस हु हैव रीच्ड आउट टू द डॉक्टर नाउ, जो टाइमली डॉक्टर को रीच आउट कर जाते हैं, तो ऐसे केसेस में व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज फॉर हैं. यस. डायबिटिक पेशेंट्स who have experienced stroke? सो एक तो स्ट्रोक यूनिट चलती है, देयर आर डेडिकेटेड स्ट्रोक यूनिट्स इन मेनी ऑफ द हॉस्पिटल्स, एंड वी Okay, कॉल sir. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट विंडो पीरियड, जो 3 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच के उनको हम एक खून पतला होने का इंजेक्शन दिया जाता है, और जी, वो सीटी स्कैन करके देना होता है. यानी हाँ जी, किसी को भी यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो एक तो सबसे पहले आप इमीडिएटली यू कॉल द एम्बुलेंस, नॉट कॉलिंग हाँ जी, द जो भी फर्स्ट रिलेटिव है, the second person will be calling the other relative to reach hospital directly, not in between wasting any time. जी, Reaching hospital is the most important thing. Hospital में emergency room में they first do your CT scan to rule out there is हाँ no जी, bleed. They जी, will check the routine blood and immediately giving them an injection which will lead to उनका खून पतला होने का, और उससे 100% रिकवरी हो जाती है.
जी यदि जो लोग लेट पहुंचे या नहीं लगा पाए, क्योंकि 3 मिनट बाद में वो देने में हमारे को ब्लीडिंग होने के चांस होता है 3 घंटे बाद, इसलिए फिर नहीं जी लगाते हैं। हाँ फिर जी यदि स्ट्रोक फुल फ्लेज हो गया तो उनका बहुत लंबा रिहेबिलिटेशन का प्रोसीजर है that जी requires very good neurophysiotherapist. हाँ जी Sometimes we also give them a physiotherapy for lung because otherwise a bedridden persons have more developed lung problems. तो हाँ ये जी दोनों की इंटेंसिव फिजियोथेरेपी, फिर उनको रिहेबिलिटेट करके वॉक करना। अभी तो इतने बढ़िया रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गए, न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर, कि इवन कंप्लीट स्ट्रोक होने के बाद में भी हम उनको चलाते हैं, वॉक अच्छा कराते हैं उनको। जी व्हील चेयर है तो बाद में सेल्फ कैसे चला सकते हैं उसके लिए ट्राई करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्लान, बट दिस इज लाइक ए लॉन्ग टर्म इशू बिटवीन 6 weeks to 6 months, and some of them may need even up to 2 years, 3 years for rehabilitation. जी इसके अलावा बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिस्ट के अलावा साइकोथेरेपी का रोल है। हाँ जी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर पर्सन्स हैविंग स्ट्रोक टू एक्सेप्ट द स्ट्रोक, द हाँ डिसेबिलिटी, जी the distress which is happening because of that। फिर वो जी बोल नहीं पाते तो और ज्यादा प्रॉब्लम। तो जो हाँ उसका जी अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल इशू है, जो स्ट्रेस है, जो डिस्ट्रेस है, उसको जी कोप अप करने के लिए वी नीड साइकोथेरापिस्ट, वी नीड साइकियाट्रिस्ट, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन। So हाँ जी rehabilitation is not just the physiotherapy, it is also a psychotherapy, which is very, जी and sometimes for the caregiver also we require psychotherapy and reassurance, जी because they also feel very frustrated that what happened। And जब उनको ये लगता है कि ये हमारी इतनी सी गलती के कारण हो गया, हमने शुगर का ध्यान नहीं रखा, या हम वहां गए, वहां दवाइयां नहीं ली, या भेज दिया और शुगर बढ़ गया, और इनको काफी टाइम से ब्लड प्रेशर की हाई तकलीफ थी, शुगर जी की तकलीफ थी, हमने ध्यान नहीं दिया, तो दे ऑल्सो फील वेरी वेरी पेनफुल सिचुएशन। हाँ तो जी हो जाने के बाद में तो आप उनको डांटने का कोई मतलब नहीं है, आपको तो रीअश्योर करना है। यू हैव टू गिव जी देम ए साइकोथेरेपी, यू हैव टू रीअश्योर जी देम फॉर a better care for the person who have already suffered. So this is what we do. It's a जी There are dedicated stroke unit in many of the hospitals. They हाँ also जी have a rehabilitation program too in the physiotherapy center, and physiotherapy के साथ में psychotherapy is also required. So it is mostly required. Some patient may require even psychiatric treatment. Suppose they get so much disturbed कि जी उनको फिर साइकियाट्रिस्ट की। हाँ जी हाँ जी सर। और आपने जैसे अभी बताया हमें, इनफैक्ट आप बार बार इस पे एम्फेसिस भी दे रहे हैं कि ट्रीटमेंट से बेहतर या मैनेजमेंट से बेहतर हमेशा बचाव रहता है। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर एनीबॉडी who's been diagnosed with diabetes is a must। तो सर बस उसी को थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हुए, what lifestyle modifications would you suggest your patients, so that they could adopt to reduce their risk of stroke? सो सबसे पहले तो एक तो वॉकिंग बहुत जरूरी जी है। तो वॉकिंग से हमारे शरीर का सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का सर्कुलेशन बढ़ता है। सो आपको हाँ जी मिनिमम हाफ एन आवर इज वॉक इज मस्ट, हाँ जी दैट्स एन एरोबिक एक्सरसाइज है ना। बिल्कुल वो एक्सरसाइज भी अच्छी खासी स्पीड पर होनी चाहिए, प्लस सम अदर योगा एक्सरसाइज, जिम, muscle strengthening, everything is required. So that's number one. जी More protein intake, ठीक है less carb, complex carb, हाँ more जी fibers, जी fruits, जी nuts, जी दाल। These are ओके the things जो ज्यादा देते हैं। प्रोबायोटिक के लिए हम उनको छाछ पीने के लिए रेगुलरली भी प्रोत्साहन करते हैं, so that जी will have can take care of the gut health also। हाँ And जी overall simple sugar we ask them not to take in any form। ओके आपने कभी रसगुल्ला खा लिया, कभी चीटिंग कर ली, कभी आपने प्रसाद के रूप में खा लिया, वो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। एंड जी प्लीज बी कॉम्प्लायंट विथ योर मेडिकेशन, विथ योर मॉनिटरिंग, विथ योर थेरापी, विथ मेडिकेशन, एवरीथिंग। राइट। इसमें सर मैं एक चीज बस और, आप हमें थोड़ा सा इसमें गाइडेंस दीजिए अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आई थिंक डायबिटीज डेवलपमेंट का आज की डेट में स्ट्रेस भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी रिस्क फैक्टर है। तो क्या सर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन प्ले अ रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वेरी स्ट्रोक इंपॉर्टेंट टू अमंग रिड्यूस द डायबिटिक स्ट्रेस, पेशेंट्स? बट समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, आई टेल हाँ यू। जी बिकॉज हाँ सबका जी क्या स्ट्रेस है वो आपको पता नहीं चलता। हमको जी लगता है कि जैसे सपोज करो कि अभी आपको नहीं लग रहा है कि मेरे को कोई स्ट्रेस है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर पेशेंट बैठे हैं, वो मेरे लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है।
or I may enjoy talking to you and I may forget those stress also which is there to me. So जी, हर आदमी के लिए अलग अलग है. दूसरा जी, कई बार सेम एक्शन में have a different reaction also. हाँ जी, कि the same type of problem may have पूरी फैमिली के साथ में कॉमन इश्यू है, लेकिन एक आदमी उसको बड़ा हंस के ले रहा है, एक आदमी बड़ा डिस्टर्ब होके ले रहा है. सो जी, हम सबको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में समझाना जरूरी है. सबको समझाते हैं, हम टाइम साइकोथेरेपी की हेल्प भी लेते हैं. हर आदमी का नेचर अलग अलग होता है, तो कहना बड़ा इजी है, इट्स रियली डिफिकल्ट. सो आई टेल यू, हाँ जी, इन माय लास्ट 25 years ऑफ माय एक्सपीरियंस, इफ यू आस्क मी वन थिंग कॉमनली कि सर स्ट्रेस कैसे दूर करें, यू डोंट नो हाउ टू डू इट बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअलाइज्ड क्वेश्चन. उसके हाँ अलावा कई बार वो आपको बताते भी नहीं है, उनको भी शर्म जी, आती है हाँ कि जी, क्या इस बारे में बात बताते हैं, तो सभी के घर की कॉमन होगी, या ये ऐसा ही होता होगा, या ऐसा ही मान लेते हैं वो. सो यू डोंट हाँ नो जी, एग्जैक्टली व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दे हैव. जी, And sometimes जी, the reason you may not understand also as a doctor because you are at a different level, or yes, you may not think even that is the stress level. एक मदर के लिए उसका बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है या उसका अभी एग्जाम आ चुका है, इट मे बी वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर हर, एंड इट मे yes, नॉट बी फॉर हिज फादर, एंड फॉर समवन हु इज ए थर्ड पार्टी जो उसके दादा दादी, उनको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो सकती है. और हो सकता जी, है उसके दादा को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है उस बच्चे का बिकॉज इज फादर इज स्ट्रेस. So you हाँ जी, never know, the same situation may lead to multiple different type of stress, but हाँ जी, definitely social, financial, personal stress are also very common, and which we see very commonly. Sometimes we try to explain, sometimes we try to take the help of psychotherapists. Many people, they don't go to psychotherapists for this type of stress, but I think here the role of mental health professional is very very high. People should जी, understand and they should go and take the treatment, seek the treatment from mental health professionals depending on their level. If they feel that they can't cope up this, please go and visit. इट डज नॉट मीन कि आप पागल हो गए हैं, आप पागल होकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप पागल के लिए आप कोई साइकोथेरेपी लेते हैं. हमारे को सभी को जरूरत हो सकती है, वो कोई भी लेवल पर हो. ही मे बी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन और ही मे बी एनी वन. सो एनी वन जी, कैन हैव द स्ट्रेस, और आपको स्ट्रेस के लिए जरूर से एक मेंटल हेल्थ फिजिशियन या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए. हाँ जी, राइट सर. एंड अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस. जो डायबिटिक पेशेंट्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट आई पर्सनली फील इज हेल्थ लिटरेसी. So, sir, in what ways can health literacy initiatives, enhance awareness and prevention of stroke among diabetic populations? तो सबसे बड़ी हेल्थ लिटरेसी आप कर ही रहे हैं, एक इंटरव्यू कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट जी सर. बना रहे हैं, दैट्स इटसेल्फ गोइंग टू इंक्रीज द हेल्थ लिटरेसी. सो हेल्थ राइट. का नॉलेज होना और लिटरेट होना दो अलग चीज है. तो जी. जैसे हमारे पास कई चीज कई बार जानते हैं, लेकिन हम उसको यदि डेली डे टू डे लाइफ में अडेप्ट नहीं करते, हाँ तो जी. हम लिटरेट नहीं है एक्चुअली. सो जी. हेल्थ लिटरेसी का लेवल बहुत बढ़ना बहुत जरूरी है. सबको पता है कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, हार्ट अटैक बढ़ता है, बट दे डू इट. सो इट मीन्स दे आर अवेयर ऑफ इट बट दे डोंट वांट टू Yes. लीव इट. So that means Yes. they are not literate for it, but they know about it. So to become health aware and then not to adapt in your lifestyle, it means you are not literate for it. They know जी. that they should go for walk and they are not doing it. सो जी. हमारे देश में हेल्थ लिटरेसी या हेल्थ अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. कई हाँ लोग जी. हेल्थ अवेयर है. अवेयरनेस को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने का काम डॉक्टर्स का, ऑर्गेनाइजेशन का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, कई तरह का चालू ही है. एंड वी आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वी आर ट्राइंग टू हेल्प द पीपल, लेमन पीपल ऑल्सो. जी. एंड दिस लिटरेसी आई एम श्योर इफ यू लर्न एंड इफ यू लिसन ऑल these things multiple time, probably जी. you will become health literate. जैसे मैं Yes. आपको बार बार बोल रहा हूं तो मैं लिटरेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड जी. में ये प्रोग्राम, एक प्रोग्रामिंग हो रहा है कि मेरे को जी. कल से वॉक करना है. मैं यदि दूसरों को 10 जनों को बोल पाऊंगा तो मैं तभी बोल पाऊंगा जब मैं खुद जाऊंगा. सो हाँ जी. आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट ऑल्सो कि इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, please जी. tell your relatives, your friends, your colleagues in your office, at your home, and that will help you also because this जी. will make you health literate and you will able to prevent not only disease in you but also to your relatives, family, and this will improve the overall care for people with diabetes and overall care with people.
I think it will actually help us, in generating subconscious feeding, एक तरह की subconscious programming में help होगी, right, sir? Exactly. So I am just going to summarize this wonderful session by a final question that could you outline a comprehensive to-do list for individuals with diabetes, to minimize their risk of stroke? Number one, first take care of your sugar. जी, Take advice of doctor. जी, Lifestyle modification is of most importance. So don't जी, forget to go for walk. जी, Take healthy lifestyle and healthy जी, eating habit. Very, very important. Doing जी, yoga, exercise, extremely important. Don't जी, forget to monitor your sugar, blood pressure, cholesterol. जी. Screen for the complication. And don't forget to follow your doctor on a regular basis. Ji, sir. So constant monitoring of blood sugar levels, maintaining a healthy lifestyle, and adhering to your doctor's instructions is the key here. How wonderfully put, sir. So on that beautiful, beautiful note, I really appreciate your presence with us today, sir. And I'm hoping that the enlightening information shared will be valuable to many families out there. So thank you so much for joining us. It's really been a pleasure. Thank you. Thank you so much, sir. And for more such informative videos, please do subscribe to our channel and press the bell icon for regular updates. Thank you once again. Sir. Thank you. Thank you.